वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेशन नंबर 6, टॉपिक द गैसियस स्टेट। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन 3 states of matter: Boyle's law, Charles law, graphical representation, Kelvin scale of temperature, temperature pressure law, Avogadro law, ideal gas equation, Dalton law of partial pressure, kinetic molecular theory, RMS velocity, Maxwell Boltzmann distribution law, effect of temperature on velocities, van der Waals equation, liquefaction of gas, and critical temperature. Now, state of matter कि मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी मैटर 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक सॉलिड अवस्था होती है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होती है। सॉलिड मजबूत, जैसे टेबल है, सॉलिड स्टेट में है। पत्थर होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड स्टेट में जो तरल पदार्थ होते हैं, ऑयल हो गए, वाटर हो गया, ये सभी हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। और गैस जो है हवा के साथ, किसी भी तरह की हवा के जैसी चीजें गैसियस स्टेट में कहलाती हैं। अब यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिस शेप हम लेते हैं कि किस शेप में पाया जाता है। तो सॉलिड की शेप जो है डेफिनेट होती है। जैसे चेयर है, एक ही स्टेट में रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। टेबल, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सभी सॉलिड स्टेट होती है। जिस तरह से आपने एक बार बना दिया, उसी स्टेट में वो बने रहेंगे। लिक्विड की जो है इंडेफिनिट स्टेट होती है। टेक्स अप द शेप ऑफ द वेजल, कि जिस बर्तन में भी आप रखना चाहते हैं उसी शेप में वो बदल जाता है। गैस इंडेफिनिट शेप होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती। अब बात करते हैं वॉल्यूम की रिगार्डिंग। वॉल्यूम जो है सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का इंडेफिनेट होता है, फिल्स द कंटेनर्स कंप्लीटली। डेंसिटी की यदि बात करते हैं, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, लेकिन गैस से ज्यादा होती है, और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड जो है इनकंप्रेसिबल होता है, यानी चेंज नहीं किया जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। लिक्विड जो है लार्जली इनकंप्रेसिबल होता है, जबकि गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। नाउ Boyle's law. Boyle's law states that at constant temperature the volume of a given amount of a gas is inversely proportional to its pressure. कि जब टेम्परेचर आपका स्थायी होता है तो वॉल्यूम जो है गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली रिलेटेड होता है। मैथमेटिकली Boyle's law is expressed as V equal to V is सर्वांग सम ऑफ 1 upon P, और P1 V1 equal to P2 V2, where P is a pressure and V is a volume of gas. Explanation of Boyle's law like this one. आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो स्तंभ है वो P है, दैट मीन्स प्रेशर को डिनोट करता है, और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका वॉल्यूम को प्रेजेंट करता है, और टेम्परेचर जो है T और N जो कि कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। तो इस तरह से
इन्होंने एक्सप्लेनेशन करके दिया, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया. नाउ एग्जांपल्स ऑफ Boyle's laws. The volume occupied by a given mass of a gas at 298 K is 24 ml at 1 atmospheric pressure. Calculate the volume of a gas if the pressure is increased to 1.25 atmospheric, keeping temperature as constant. Now it can be solved by using the formula. Solution: V1 equal to 25 ml, P1 equal to 1 atmospheric pressure, P2 आपका इंक्रीज हो गया है 1 से 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको 1.25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है. सो अकॉर्डिंग टू Boyle's laws, P1 V1 equal to P2 V2. So substituting the values of P1 V1 and P2 in the above expression, then we get V2 equal to P1 upon P1 into V1 divided by P2. So the value of P1 is 1 atmospheric pressure and V1 equal to 25 ml divided by 1.25 atmospheric pressure, which is equal to 20 ml. So the volume occupied by the gas is 20 ml at 298 K and 1.25 atmospheric pressure. Now Charles law, which states that a constant pressure, the volume of a given amount of gas is directly proportional to the absolute temperature. Mathematically, Charles law is expressed as shown below. V proportional to T, यानी वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनलिटी होता है टेम्परेचर के. So V equal to K into T, where K is a constant. Therefore, it can be explained by using this relation, like V1 upon T1 equal to V2 upon T2. Graphical representation. Mathematically, volume of a gas at temperature T is given as Vt equal to V0 plus V0 upon 273 multiply T, which is equal to, taking V0 as common, so 1 plus T upon 273, which is equal to V0 273 plus T by 273. Now Kelvin scales of temperature. The scale of temperature which has minus 273 degree Celsius at 0 is called Kelvin scales. Degree Celsius is converted to Kelvin by adding 273. Thus T upon C plus 273 equal to T by K, where T equal to temperature in Kelvin and small t is temperature in Celsius. So for example, 15 degree Celsius can be converted in K by adding 273 to 15. Now temperature pressure law. This law states that pressure of given amount of a gas at constant volume is directly proportional to its absolute temperature. So P proportional to T, P equal to KT. Example, a given amount of a gas is maintained at constant pressure and occupies a volume of 2 liters at 1000 degrees Celsius. What would be the volume if gas is cooled to 0 degrees Celsius, keeping pressure constant? And our solution, temperature pressure law. Given that initial volume V1 equal to 2 liter, T1 equal to 1000 plus 273, which is equal to 1273 K. Final volume is equal to calculated T2 equal to 0 plus 273, which is equal to 273 K. Now using Charles law, V1 upon T1 equal to V2 upon T2, or V2 equal to V1 upon T1 multiply T2. On substituting the values, V2 equal to V1 upon T1 into T2, which is equal to 2L divided by 1273K multiply 273K, which is equal to 0.4291 L.
Avogadro's law, it states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Avogadro's कहते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का वो इक्वल नंबर ऑफ टेम्परेचर और इक्वल नंबर ऑफ प्रेशर के बराबर होता है. सो मैथमेटिकली एवोगाड्रोज लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज V is sum to n at constant temperature and pressure, where V and n are volume and number of molecules respectively. So he also found that the number of molecules represent in 1 mole of any substance 22.4 liters of any gas at 273 K temperature and 1 atmosphere pressure is 6.022 multiply 10 to the power 23 molecules. This number is known as Avogadro's number. Example of Avogadro's law: 0.965 mole of a gas occupies a volume of 5 liter at 298 K temperature and 1 atmospheric pressure. So what would be the volume of 1.80 mole of the gas at the same temperature and pressure? So we know that V1 into N2 equal to B2 into N1. So B2 upon N2 divided by N1, which is equal to 5.0 L multiply 1.8 mole divided by 0.965 moles, which is equal to 9.33 लीटर. तो इसको जो है हम बड़े आराम से एवोगाड्रो नंबर का यूज करके और वॉल्यूम निकाल सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर. आइडल गैस इक्वेशन: वॉल्यूम इक्वल टू NT अपॉन P और PV इक्वल सर्वंगसम टू NT. So PV equal to constant multiply NT. The constant in this equation is called universal gas constant or molar gas constant, represented by R. Thus we can write for 1 mole of gas PV equal to nRT. This is known as the ideal gas equation because it holds only when gases are having as ideal gases. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of the various gases present in mixtures. Dalton's law can be written as P total equal to PA plus PB plus PC plus and so on. Since PA equal to NA multiply RT upon V, PV equal to NB multiply RT upon V, and P equal to nRT upon V. It follows that PA equal to XAP and PB equal to XBP. Gram's law of diffusion. Diffusion, the process of the substance spreading out to evenly fill its container or environment. In air or gas, molecules diffuse to mix throughoutly. It moves from high concentration to low concentration. Effusion, इसके बाद diffusion के बाद effusion होता है. Effusion is the process of gas molecules. If the time for a given volume of gas A to escape is Ta, while the time for the same volume of gas B to escape is Tb, it follows that Ta upon Tv equal to rate B upon rate A, which is equal to under root sigma A or mu rho A upon rho B, where rho A and rho B are the density of gases A and gases B respectively. Now kinetic molecular theory. Gases consist of large number of tiny particles called molecules. कि बड़े चमकीले जो हैं बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. द गैस मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल and so far apart that the total volume of the molecules is a negligible fraction of the total volume occupied by the gas. इतने छोटे होते हैं कि उनको जो है देख पाना
इम्पॉसिबल होता है और उनके वॉल्यूम जो है गैस की वॉल्यूम की अपेक्षा बहुत ही कम होता है. देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई नहीं होता है. द collision of the molecules are perfectly elastic so that there is no loss of energy during collision. The pressure exerted by a gas is due to the bombardment of a molecules, that is PV equal to 1 by 3 mnc square. RMS velocity oblique average velocity. Root means square velocity is the square root of the average of squares of all the molecular velocities. So mathematically we can explain it as RMS velocity equal to under root C1 square plus C2 square plus C3 square plus and so on Cn square divided by n. Average velocity, this is defined as UAV equal to under root 8 RT upon pi m. Maxwell Boltzmann distribution law. At the given temperature, even though the speed of the individual molecules continuously changes, the fractions of the molecules having the same speed remain constant, and this is known as Maxwell Boltzmann's distribution law. Effect of temperature, like this one. So at the given temperature, the most probable speed is given by the following expression: UMP equal to under root 2 RT upon m. Van der Waals equation P plus a n square divided by P v square multiply v minus nb, which is equal to nRT. This is known as Van der Waals equation, and he explained our equation. He explains his equations by given this pressure, like pressure 200, 400, 600, 800, 1000, and volume is given on perpendicular sides. So the pressure of ethane, then pressure of methane, then hydrogen, ammonia and ideal gas. उन्होंने एक डायरेक्शन बताया कि किस पर कितना प्रेशर होता है. Now liquefations of the gases. Any gas can be liquefied at atmospheric pressure. If it is cooled sufficiently, many gases but not all can be liquefied at ordinary temperature by compressing them. सभी गैसेज जो है नहीं होती है. The temperature above which a gas cannot be liquefied, however large the pressure may be, is known as critical temperature. The pressure required to liquefy the gas at the critical temperature was called critical pressure, and the volume of 1 mole of the substance at the critical temperature and pressure the critical volume. Like this one, water और H2O की बात करें तो critical temperature 647 and pressure 217.7. Sulfuric dioxide SO2 critical temperature 430 and critical pressure 77.7. Ammonia NH3 critical temperature 406 and critical pressure 112.5. Hydrogen chloride, which is HCl, critical temperature is to 324 and critical pressure is equal to 81.6. Carbon dioxide CO2 critical temperature 304 and pressure 73. Then oxygen critical temperature 154 and critical pressure 49.7. Then nitrogen gas N2 critical temperature 126 and critical pressure 33.5. Then hydrogen H2 critical temperature 33 and critical pressure 12.8. Now do it yourself. What are the conditions under which real gases behave as ideal gas? इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें रियल गैस जो है आइडल गैस की तरह व्यवहार करती है. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओजोन kept in a closed vessel at 20 degrees Celsius
and 1 atomic pressure. Question number 3rd. Calculate the volume of 1 mole of oxygen at 27 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure, given that the volume of oxygen at STP is 22.4 liters. What is the Maxwell-Boltzmann law? And last question is that what is the lowest possible temperature? And that's it from session number 6. Thank you.